Next question. Mr. SG sold 5 4-month Nifty Futures on 1st of February 2020 for rupees 9 lakhs. तो मिस्टर एसजी नाम के एक स्पेक्यूलेटर ने या तो एक ट्रेडर ने 4 मंथ का निफ्टी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचा है 1st ऑफ फरवरी को कितने में? 9 लाख रुपए में. At the time of the closing trading on the last Thursday of May 20, यानी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, that is what they have provided. There is February, March, April, May. That is the way the 4th month is expiring. तो 4 महीने के बाद index turned out to be 2100. The contract multiplier is 75. Based on the above information, there are a few questions which are being provided to us. यानी फ्रेंड्स हमको ऐसा दे रखा है कि 1st ऑफ फरवरी को मई मंथ के लिए हमने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, इन विच वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर सेल. So the transaction is entered upon for sale index. कितना? An amount of rupees 9 lakhs. Like that information is given. Last day the index turned out to be 2100 and we have been provided that the 5 contracts have been entered upon and the contract multiplier is say 75. So बाद में हमको क्या करना पड़ेगा? We are required to purchase index. थोड़ा इनफॉर्मली पहले डिस्कशन कर रहे हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. So it is 2100 into 75. This is the value of the one contract. 1,57,500 into 5. हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है. So we have to buy index to square off the original sale and that will result into a profit of rupees 1,12,500. This is what we understand. The second thing that we of course understand, 9 lakh rupees is the value of the 5 contracts. So what must be the value of one contract? It is 9 lakhs upon 5. That comes to 1,80,000 और हमको मल्टीप्लाई दे रखा है 75. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2400 must be the price at which we have entered into the transaction for sale. 75 is the lot size and 5 is the number of contracts. ऐसा करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे. So we understand that say 2400 was the price at which we entered into the transaction for sale. लास्ट डे का प्राइस 2100 हुआ तो 300 रुपये का प्रॉफिट इंटू 75 दैट इज द लॉट साइज इंटू 5 कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज ऑल्सो द वे वी कैन मेक द कैलकुलेशन एंड दैट कम्स टू 1,12,500. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ वन बाय वन लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st of February 2020. तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में 1st of February को एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फाइंड करना है. अप्रॉक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स ऑन 1st of February 2020 if the price of the futures contract on the same day was theoretically correct. On the same day, risk-free rate of interest and dividend yield on the index was 9% and 6% per annum respectively. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 9% और डिविडेंड यील्ड दे रखा है 6%. दिस इज अ न्यू क्वेश्चन फॉर अस. बहुत सिंपल है, मैक्सिमम कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन, पे ऑफ फॉर द ट्रांजैक्शन, कैरी आउट द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स. दैट इज अ क्वेश्चन. सो अगेन लेट अस हैव अ डिस्कशन बिफोर वी प्रोसीड. क्वेश्चन में ये पूछा है, what is the price of one futures contract on 1st of February 2020. तो 1st of February को एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या होगा? दैट इज अ क्वेश्चन. वी अंडरस्टैंड दैट से यूज अ कैलकुलेटर 2400 into 75. दैट कम्स टू 1,80,000.
या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 9 lakhs अपॉन 5, क्योंकि 9 लाख रुपए 5 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना, 1,80,000. So let us write down answer for the question and then we'll proceed for the further questions. चलो write down answer. Price of one futures contract is equal to futures value of five contracts divided by number of contracts. So the futures value of the 5 contracts is 9 lakhs and number of contracts are 5. So price of one futures contract is 1,80,000. Second question, approximate Nifty Sensex on 1st of February. I think that's this Sensex word is printed by them by mistake. So approximate Nifty on 1st of February 2020 if the price of futures contract on the same day was theoretically correct. तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से आपको स्पॉट इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन करना है. सो आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उस पर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट इंडेक्स वैल्यू. ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 1st of February. In that write down working note for calculating futures index value. उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? We understand it is the futures value of one contract divided by lot size. So futures value of one contract is 1,80,000 and the lot size is 75. So the final answer is going to be rupees 2,400. तो फ्रेंड्स ये क्या है, फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू है और हमको कैलकुलेट करना है स्पॉट इंडेक्स वैल्यू. और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा है कि अज्यूमिंग दैट से जो करंट प्राइस है वो वही है जो होना चाहिए, देन इन दैट केस से प्राइस क्या होगा. एंड इवन अदरवाइज वी वर गोइंग टू अप्लाई द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल. सो कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट इंडेक्स वैल्यू, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट इंडेक्स वैल्यू प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड. दैट इज अ सिंपल फॉर्मूला. फ्यूचर्स इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,400. सो दिस इज 2,400 इज इक्वल टू स्पॉट इंडेक्स वैल्यू प्लस स्पॉट इंडेक्स वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इट हैज बीन गिवन एज 9% और डिविडेंड यील्ड क्या दे रखा है? 6%. 0.09 into the time period is provided to us say as 4 months, 4 divided by 12 माइनस क्या किया जाएगा? डिविडेंड किया जाएगा.
spot index value into 0.06 into 4 divided by 12. This is the way we are required to make the calculation of answer. So 2400 is equal to spot index value plus spot index value into 0.06 minus 0.09 minus 0.06 into 4 divided by 12. यानी क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड यील्ड. So 2400 is equal to spot index value into देखो 0.09 minus 0.06 यानी क्या होगा 0.03 into 4 divided by 12, that comes to 0.01. So it is 1 plus 0.01. ये 0.01 का हम लोग एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं 0.03 into 4 divided by 12. ऐसा करके हम लोग स्पॉट इंडेक्स वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो स्पॉट इंडेक्स वैल्यू इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 1.01. So 2376.24. That is the way the spot index value can be found. Now friends, of course the third part of the question is slightly new for us. Question में ऐसा दे रखा है, calculate the maximum contango or backwardation. For that say we understand something like this. In order to calculate the answer of the third question, let me explain you first of all. First of all, we are required to compute the basis. Basis is the difference of spot and futures or forward. जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में spot है 2376.24, forward slash futures है 2400. So the basis is 23.76 negative. So the basis can be positive or negative also. Now अगर ये basis positive है या negative है तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ. We understand that say as basis is negative, it is called Contango. अगर ये बेसिस पॉजिटिव होता तो उसको बैकवर्डेशन बोलते हैं, और अगर ये पॉजिटिव है तो उसको क्या बोलो, दैट इज बोला जाएगा कॉन्टेंगो. कॉन्टेंगो का सिंपल मतलब ये है दैट द फॉरवर्ड इज मोर देन स्पॉट, और जो यूजुअली ऐसा ही होगा. और सपोज से ये बेसिस पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये हुआ, वी अंडरस्टैंड दैट द स्पॉट इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड, और ऐसा यूजुअली नहीं होता है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड से द बैकवर्डेशन. वी अंडरस्टैंड दैट से ग्रेजुअली क्या होगा, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस इज रीचिंग, जैसे जैसे द टाइम पीरियड ऑफ द एक्सपायरी इज से द क्लोजिंग टू द डेट ऑफ द एक्सपायरी, से ये बेसिस विल अप्रोच टू जीरो. और ये बेसिस क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो ऑन द डेट ऑन विच से द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर. I repeat it again. The basis is calculated as the difference of the spot and forward. The basis can be positive also, basis can be negative also. Generally we understand that so the basis should be negative, and that is given a name as the contango. If it is positive, then in that case it is called backwardation. We understand that so generally positive नहीं होता है due to cost of carry model. Forward is usually greater than the spot. But ऐसा हो सकता है that the dividend yield की वजह से it may be say positive also. We understand that say ये जो basis का value है ना, वो जैसे जैसे से the time period of the expiry नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे it reaches to the zero. Why? Because we understand that the time gap between the
spot and forward is getting reduced, or because of that, so the basis will approach to 0. This is what we understand. Write down this answer. Chalo, with paragraph write down. Basis means difference of spot and forward / futures. Full stop. It can be positive or it can be negative. Full stop. उससे में लिखो आगे, if it is positive, comma, it is called backwardation or inverted market. Full stop. With paragraph write down. If basis is negative, comma, it is called Contango. उससे में लिखो आगे, always basis will approach to 0, comma, with expiry of time and by the time futures contract expire. Full stop. Next question. What is the payoff? Payoff का मतलब यहाँ पे क्या समझेंगे? Profit loss of the transaction. तो जो हमने इनिशियल यहाँ पे कैलकुलेट किया था वो अभी हमको आंसर कैलकुलेट करके देने का है. चलो, राइट डाउन आंसर. Answer for the fourth question. Calculation of the profit or loss from the transaction. उसमें क्या लिखेंगे? सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू. सेल वैल्यू कितना है? 9 लाख. परचेज वैल्यू कितना है? 2100 इंटू मल्टीप्लायर है 5 और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉरी, मल्टीप्लायर 75 और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 5. So the answer is 7,87,500. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट और लॉस. So this 787,500 is deducted from 9 lakhs. So it comes to 1,12,500. This is the way the profit or loss from the transaction can be calculated. तो पूरे आंसर का एक समरी. फर्स्ट क्वेश्चन में एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइस पूछा है, तो वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट कम्स टू 1,80,000.
दूसरे क्वेश्चन में स्पॉट इंडेक्स वैल्यू पूछा है. इन दैट से व्हाट वी हैव डन, एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारे पास प्राइस था डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके हमने फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू फाइंड किया. उसके बेसिस से स्पॉट इंडेक्स वैल्यू, दैट इज स्पॉट इंडेक्स वैल्यू प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड इज फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू. That comes to 2376.24. Then we will compute the basis, spot minus forward. It is 2376.24 minus 2400. ये पूरा का पूरा नया क्वेश्चन है. Except that से बाकी के जो सारे क्वेश्चन है, that is what we have done directly or indirectly number of times. तो अगर बेसिस नेगेटिव है तो उसको Contango बोलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको we will call say the backwardation or inverted market. And of course we understand that say जो basis का value है that will approach to zero by the time the futures contract will expire. लास्ट में हमको प्रॉफिट या लॉस पूछा है, ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया उसका हमने पहले सेल किया था, बाद में बाय करना पड़ेगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट और लॉस.